Welcome. Today taken again GATE-15 problem 2015 क्वेश्चन नंबर 24 या 34 आप जो सेट हो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही डिफरेंशियल इक्वेशन का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तो इसको हम सॉल्यूशंस कर लेते हैं। कैसा है, बहुत ही सिंपल है। तो पहला वर्क जो होगा हम उसको देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का एक बेसिक प्रॉब्लम्स है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस इज x² प्लस वाई dx is equal to x dy what dy, ठीक है। तो dy by dx क्या हो सकता है आपका, फर्स्ट यू फाइंड आउट x dy by dx is equal to x² plus y को टेक इन द लेफ्ट हैंड साइड्स में आप ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए समथिंग। तो गो फॉर दिस x dy by dx minus y is equal to x square, otherwise dy by dx minus 1 by xy is equal to x. This is equation number 1, so which is LDE, linear differential equation of first order and first degree, that is important. तो अब व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू तो हो जाएगा आपका -1 by x dx, the integrating factors. So integrating factor is also here minus e raised to minus log of x, imply that only 1 by x. So integrating factor is here, find out this 1 by x. So now go for the solutions. Y into integrating factor 1 by x is equal to right hand side portion x into 1 by x plus c dx. Y by x is equal to x plus c, y is equal to x square plus cx. Here this is y of x, already simplify कर लीजिए, then we go for this right hand side portion into something इंटीग्रेशन। व्हाट इज द गिवन, y1 is equal to 2 is given है, तो c की वैल्यू y of 1 is equal to 2 is given, तो y1 पुट अप कर दीजिए, 2 is equal to 1 plus c, तो c is equal to 1, ठीक है। 2 हो जाएगा 1 and 1, तो c is equal to 1, तो नाउ वी गेट y of x is equal to what, yx is equal to x square plus x, तो y of 2 what, so 4 plus 2 6, so that is y of 2 is equal to 6, your answers. तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था ये, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। सिंपल वे में अपने इस कैलकुलेशंस को हम सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।